Hello student, now I will discuss the third type of question asked it free response question in AP exams, that is experimental design and analysis. In this question, a beaker filled with some amount of liquid is given to you, and it is describing that a group of students are given a cylindrical container half filled with a liquid and unknown density rho, and they have another container in which they have sufficient amount of liquid, and they also a meter stick and pressure sensor that is given to you. Now they want that by the taking measurement, uh, create a graph that could be used to determine the density of liquid. तो ये सब अपन को दिया है कि आपको एक बीकर दे रखा है, उसमें आपको मीटर स्केल और प्रेशर सेंसर दे रखा है, जिससे कि आपको उस बीकर की जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपको पता करनी है। और जो आपने डाटा कलेक्ट करा है पार्ट ए में, उसको प्लॉट करके देखिए कि कोई लीनियर ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उस ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है, क्या उस ग्राफ से हमें डेंसिटी मिल सकती है, ये सारी बातें पूछिए। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एपी एग्जाम टोटली कॉम्प्रिहेंसिव स्किल के ऊपर बेस होते हैं विथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स नॉलेज। फिर उन्हें बताया कि एक स्टूडेंट ने एक होल करा डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, और होल की हाइट और स्पीड जो निकल रही है उसमें इन्होंने एक डाटा प्लॉट करा। तो इस डाटा से एक स्टूडेंट ने रिलेशन प्रेडिक्ट करा कि भाई ये उनका बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन भी आपको दे रखा है एपी एग्जाम में, कि वो भी आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के थ्रू निकालना नहीं है, वो भी उन्होंने आपको दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि ये बताओ कि वी स्क्वायर तो अगर हम वाई एक्सिस पे रखें, वर्टिकल एक्सिस पे रखें, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सी फिजिकल, कितना सिंपल। देखो एपी एग्जाम सबसे सिंपल होता है, कंसेप्चुअली बहुत सिंपल होता है, लेकिन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग क्या वो पूछ रहे हैं, क्या डाटा को यूज करना है, उस पर उनका फोकस होता है मेनली एपी एग्जाम में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रखें वो देखेंगे। फिर ये बताएगा कि ग्राफ को प्लॉट जब हम कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कैसे मिलेगी। वी स्क्वायर और एच के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उससे हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे पता चल जाएगी। यानी अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि एक क्वेश्चन की थीम ये है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, यानी आपको एक बीकर दे रखा है, उसमें लिक्विड दे रखा है, यू हैव मीटर स्केल एंड प्रेशर सेंसर, बाय इट यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। तो द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी needed to read complete question, and comprehensive understanding is needed. So first we know that the pressure due to liquid column P equal to rho GH. Now as we increase the height, the value of pressure will be increases, and if we draw the graph between P and H, so obviously rho is constant and G is also constant, so graph would be linear, because the and slope of the graph will be P upon H, perpendicular upon base is the slope, that is rho into G. So from slope of the graph you can calculate rho into G. And next you have relation between height and the speed, and the height and the speed related by this factor. Now if we square both the sides, then V square equal to 2GH. 2G is constant, so we can say Y is proportional to X, because at Y axis they are plotting V square. At Y axis they are plotting V square. Then they want to know what will be the physical quantity at horizontal axis. Then H is a variable because 2G is constant. So there will be also straight line relation, because Y proportional to X represent the straight line relation. So when we draw the graph between V square and H, that must be a straight line. Now what the slope will give? If we divide the V square by H, that is the slope of that graph, V square versus H. Now the slope is twice of G. By dividing 2, you will get the acceleration due to gravity. So simple question. So now they plotted the graph of V square according to given unit 0, 1, 2, 3. Now we will plot the position like that. At height 0.05, the speed is 1.1. Now student is asked to plot the graph on graph paper. So this is the graph between height and velocity, square of velocity.
This is a graph. Now we have to calculate v square by h. V square by h is a slope that is equal to 2g. Now approximately if we find that the v square over here is 1 and the slope is 0.05, approximately is it is greater than 1, I am taking approximately. Calculate the slope at every point and take the average to get the most accurate answer. Now v square is 1 and base is 0.05 equal to 2g, then that is equal to 20. So from here you can take a g equal to 10 meter per second square. That is a simple question to have to plot the just graph and taking the slope at different point and make average of this. So g comes out equal to 10. So this is the solution of this point. So this section is total of 10 unit. Thank you.